yes, I am a lever, but I want to make my own mark in this field. Crack also, I mean, I've gotten a lot of screen time in this film. कोई भी famous हो जाता है, और क्यों? क्योंकि आपने कुछ slow motion में ऐसे कर दिया. मेरे डैड ने कहा है कई बार तो उनके सीन्स वो खुद ही लिखते थे. आप कॉमेडियन होना, चलो कुछ बनाओ, आप कुछ करो इसमें, कुछ इम्प्रोवाइज करो. At the age of 67, any film he gets, like a child, he goes back to, like, he becomes a student. I work really hard, even if it's a mimicry of some actor. तो अभी भी थोड़ा सा एक फिल्म आती है, थोड़ा खुशी होती है, थोड़ा घमंड आ जाता है, तो मेरे पेरेंट्स चुपचाप मुझे जमीन पे लेकर आते हैं. Today when he goes out anywhere, he says, बेटा मैं किधर भी जाता हूँ लोग तेरा जिक्र करते ही हैं. Every time we used to watch his films ना टीवी पर, he used to झांक कर देखते थे, are my kids laughing? તાજા સમાચાર તમારી ભાષામાં મેળવવા માટે ડાઉનલોડ કરો ગુજરાતી મિડ ડેની એપ. How do you feel, whatever journey you have seen of your father, क्या आपको लगता है कि चीजें पहले से आज ज्यादा शायद पहुंचना, किसी मकाम पे पहुंचना, लोगों को अप्रोच करना आसान है, लेकिन स्ट्रगल बढ़ गया है? अपनी जर्नी को अपने पिताजी की जर्नी से कैसे कंपेयर करेंगे तो आपको कौन सी ऐसी चीजें हैं जो तुरंत दे आर लाइक ओ माय गॉड, ये हमारे जमाने की बात है और ये उनके जमाने की बात है? एक चीज तो है कि आई थिंक बैक इन द डे, जब मेरे डैड ने करियर में शुरुआत की थी, जब उन्होंने काम करना शुरू किया था, तब फिल्मों में ब्रेक मिलना बहुत ही मुश्किल होता था, या फेमस होना बड़ा मुश्किल होता था. बहुत टाइम बाद कोई इंसान फेमस होता था. अब जब उन्होंने स्टार्ट किया था, तब वो स्टेज शो से स्टार्ट किया था उन्होंने. वो स्टैंड अप करते थे, और कई साल स्टैंड अप करने के बाद फिर कहीं कल्याण जी, आनंद जी के साथ वो शोज करते थे. तो कल्याण जी सर ने उनका नाम रेकमेंड किया एक डायरेक्टर को. वैसे जाकर उनको ये पहली पिक्चर मिली. अब पहली पिक्चर मिलने के बाद भी कई फिल्मों के बाद, जैसे कुछ कई सालों के बाद जब उन्होंने बाजीगर की, तब उनका बड़ा ब्रेक आया. जबकि हालांकि उससे पहले वो काफी फिल्में कर रहे थे, तो काफी फिल्में कर रहे थे, और उसमें बहुत अच्छा काम भी किया था उन्होंने. टेम्पो दादा हो या कुछ और, काफी सारे उनके आइकॉनिक रोल्स थे. लेकिन बाजीगर से जो मतलब करियर में पलट हो गया, एंड तब जाके उनको फेम थोड़ा थोड़ा मिलने लग गया. तो आई थिंक वो, और उस टाइम से अगर मेरा कंपेयर किया जाए, तो अभी बड़े आसानी से लोग फेमस हो सकते हैं. आप सोशल मीडिया पे एक वीडियो डाल दें, 1 मिलियन व्यू ऐसे हो जाता है, कोई भी फेमस हो जाता है. और क्यों? क्योंकि आपने कुछ स्लो मोशन में ऐसे कर दिया, तो आप फेमस हो गए. तो आजकल इतना आसान हो गया है. आप सोशल मीडिया पे आप अपना एक वीडियो डाल दो, डांस करते हुए या स्लोमो में ऐसे करते हुए या कुछ भी करते हुए, यू कैन बिकम फेमस. सो लोगों तक पहुंचना बड़ा आसान है. वो स्ट्रगल उतना नहीं रहा. हाँ, स्ट्रगल तो है ही, इन अ डिफरेंट वे. लेकिन वो जो मेहनत उन्होंने की, उस जमाने के एक्टर्स ने की, वो अब नहीं है. मीडिया इतना प्रेवलेंट भी नहीं था उस टाइम पे. तो जैसे आप तक पहुंच रहे हैं, हम जूम पे इंटरव्यू कर रहे हैं, वैसा तो होता नहीं था उस टाइम पे. थिंग्स आर डिफरेंट. यस, हमारे पास काफी एडवांटेज है. बहुत सारे साधन है फेमस होने के, या लोगों तक अपने आप को पहुंचाने के. वो एक फर्क, मुझे मेजर फर्क लगता है. और मेहनत बहुत ज्यादा थी उस टाइम पे, बहुत मेहनत थी. मतलब आई थिंक आजकल एक्टर्स को इतना सपोर्ट मिलता है ना. टीम होती है, पीआर होता है, एजेंट होता है, स्पॉट बॉय होता है, एचएनम्यू मेकअप होता है, स्टाइलिस्ट होते हैं. उस टाइम पे इतना सब हेल्प नहीं होता था. आप खुद आते थे सेट पर. मेरे डैड ने कहा है कई बार तो उनके सीन्स वो खुद ही लिखते थे, क्योंकि डायरेक्टर्स उन पे छोड़ देते थे कि आप कॉमेडियन होना, चलो कुछ बनाओ, आप कुछ करो इसमें, कुछ इम्प्रोवाइज करो. तो उनको लिखना भी खुद होता था. बहुत सारे एक्टर्स इम्प्रोवाइज करते थे. इवन कादर खान जी, वो खुद, ही वॉज अ राइटर, तो वो खुद लिखते थे. यस. तो उस टाइम पे एक्टर को परफॉर्मेंस का प्रेशर होता ही था, बट साथ साथ ये भी होता था कि वो सीन को आपको बदलना है, कुछ आपका तड़का डालना है, कुछ डालना है, कुछ बनाना है. तो आई थिंक मेहनत उस टाइम पे काफी ज्यादा थी. अभी काफी हमको हेल्प मिल गया है. वी आर वेरी स्पॉइल्ड इन दिस डे एंड एज. थिंग्स आर easier for us. I have to be honest. How sweet. Let's talk about the projects that you are doing, and the reason why I'm finally getting to speak to you. Tell a bit, about those things. Yeah, so this year my big release was Crack, of course, which has just come out 23rd Feb. And since the time मैंने videos बनाने शुरू किए थे, I've done films.
and people have really enjoyed seeing me on screen. But since the time I started doing social media videos, I built a bigger fan base. So everybody was like, "No, Jamie, we want to see more of you on screen. Why aren't you coming in movies? Please make more movies. Why aren't people launching you? Why aren't people giving you films?" And I was like, "Bhai, launch ho chuka hai. I'm just, I'm taking my time to do films." Huh. But people were like, "Nee, we've not seen. We want to see more of you." And then that resulted in a lot of projects. I got Bhoot Police. I got offered Popcorn, my OTT web series, and then Crack happened. Crack also. I've gotten a lot of screen time in this film. काफी अच्छा रोल था मेरा जुनैदा का, and also I have to say that firstly when this role was offered, ये लिखा गया था एक आदमी के लिए. It was a male character called Junaid. And then my director Aditya Dutt, when he approached me for this role, and he said, "Jamie, this was written originally for a boy. If you see the script, it says Junaid, and we have to change it. We are going to change it because we want you, and we only want you." So it was a very flattering moment कि या चलो इन्होंने इतना सोचा मेरे लिए. And the entire dialogue, the dialogues had to be changed because they were made to female part, and then the name of the character was changed. So it was a big moment for me to get this film. And also now that it's out, people are loving it. Obviously, we have a lot of Vidyut Jambal fans, so they are going crazy. And काफी लोगों ने मुझे भी बहुत DMs आए. Lots of people are sending me clips of the film saying you were great, your dialogues were great, and I had a great time working. I also improvised a lot with in the dialogues. काफी सारे dialogues मेरे inputs थे, मेरे input थी, and so I got the chance to really play with my character. Things that you have learned from your father and you want to implement when you work. Yeah, I think I've seen his hard work. He doesn't take anything lightly. It seems very easy and effortless on screen, but he works so hard. Even now at the age of, let's say his age is 67, at the age of 67, any film he gets, like a child, he goes back to, like, he becomes a student, and he goes back to the drawing room, goes back and starts from scratch. If he needs help create that character, what can he do? Start researching, कुछ videos देखने लग जाएंगे, study करेंगे अपनी तरफ से, बैठेंगे, script लेंगे, कुछ बनाएंगे. So he works so hard, and that dedication, sincerity, discipline, that I feel like, I've always seen that, and I've wanted to implement that also in whatever I do. So I work really, really hard, even if it's a mimicry of some actor. I don't take it lightly. Ki, haan, mimicry hai, bas. No, I sit and I watch videos. I watch the body language. I watch the mannerisms. I do my own research. I sit down by myself. I think, how can I make it funny? So I'm doing my thing, and then I experiment. I make the video and put it up on social media. It works. Chalo, aur banate. So there's homework that goes into it. So I feel like that attitude I really want to maintain, to have a student attitude, to be humble. He has this really the humility that he has, being who he is, knowing he's called the king of comedy, knowing he's called the legend, and he's the Johny Lever. But if you see him, if you meet him, there's no airs he has about himself. You've met him. He's a very simple human being, and I think if you have that, you go a long way. And वो एक चीज है जो मेरे माँ बाप ने बहुत ही बचपन से हमको स्ट्रिक्टली बोला है कि कुछ भी करो, जस्ट स्टे हम्बल, स्टे ग्राउंडेड. तो अभी भी थोड़ा सा एक फिल्म आती है, थोड़ा खुशी होती है, थोड़ा घमंड आ जाता है, तो मेरे पेरेंट्स चुपचाप मुझे जमीन पे लेकर आते हैं. तो चले भाई, चने के झाड़ पे मत चढ़ो, अभी तुम कुछ नहीं हो, बहुत मेहनत करनी है. So I think that's the life I've had, and I want to maintain that. Obviously, people know you. Jamie Lever. I have seen your videos and survived through difficult times. But मुझे ये पूछना है कि जॉनी लीवर की बेटी, और एक वक्त आएगा जब वो पहचाने जाएंगे कि जेमी के पापा. How desperately are you waiting for that day? I'll tell you one thing. Sometimes I Google myself, like all actors, because we are obsessed with ourselves. Okay. Should. So yeah, I Google myself, and I came across one Google search which said, "Is Jamie Lever the daughter of Johny Lever?" So there are already people thinking, who is this person? Is she related to him?
So वो एक, because I'm also trying very hard to create my own identity, my own place, create my own fan base, create my own followers, and मेरी वो बहुत बहुत ज्यादा कोशिश रही है from the beginning. Yes, I am a lever, but I want to make my own mark in this field. I don't want that उनके कि मैं उनके छत्र छाया में चलती रहूं. I don't want his. I've never used his name. I've never wanted his support like that. I've always done everything by myself and on my own. Lekin, and I worked really hard. So he's very proud to say that मुझे नहीं मालूम है इसने खुद से किया है, इसका खुद से काम मिल गया, खुद से ऑडिशन मिला, उसने खुद से कर लिया. He's very proud when he says that. So every now and then people tell him कि आप जेमी के नाम से जाने जाओगे. तो एक दिन I don't know when that will happen. But I just want to make him proud. Today, when he goes out anywhere, he says, "बेटा मैं किधर भी जाता हूँ, लोग तेरा जिक्र करते ही हैं. मैं किधर भी जाता हूँ बोलते मैं आपका फैन हूँ, but मैं जेमी का फैन." So he just feels his heart is like swelling with pride, and he just feels really happy. Because growing up, I'll tell you, every time we used to watch his films na TV पर, he used to झांक कर देखते थे, "Are my kids laughing?" And he used to ask me, "Beta, you're proud of me? Beta, you're proud of me?" And that innocence he had about himself, and I just wish I can give him the same feeling that, "Daddy, are you proud of me?" That's all I wanted to make him feel proud. Wow, this is so warm. I actually had thought that I'm not going to ask you a lot of questions about your dad, but I'm a journalist. My dad was a journalist, and I think I just couldn't resist asking you. Because the father-daughter connection is always way too different. It is very difficult to put in words also. Yeah. So while you were talking about him, I'm thinking of my father, and I'm already tearing. Yeah, that's lovely. સબસ્ક્રાઇબ કરો ગુજરાતી મિડ ડે. બેલ આઇકોન પર ક્લિક કરીને મેળવો તમામ વિડીયોના ડાયરેક્ટ નોટિફિકેશન.